Hello, am I audible? Online students. Hello. ऑनलाइन स्टुडंट्स नाही दिसत काय ते. आईला विंडोज अपडेट लागलेला आहे इथे. विंडोज अपडेट हां लागलेलं आहे इथे. हां त्यामुळे ते हे कोण आहे? हां हे टीम्स आहे का? हे OBS आहे. हां नाही होते अरे हे बघ फाउंडेशन दाखवत आहे. आता मॅडम गेले का? अरे यार त्यांचा नंबर आहे तुझ्याकडे किंवा बघ ना खाली असतीलच गेल्या नसतील. टीम्स AC बंद आहे का रे? AC एवढा गरम आता तो मागचा लागतो का बघ ना मागचा पण कारण तो बंद वाटतोय मग. हॅलो हॅलो एम आय ऑडिबल? किती लोक आहे बस? तिथे काहीतरी चेंज करा माईक चेंज करा. हॅलो एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हॅलो एम आय ऑडिबल? ओके
निखिल, हे याच्यात आता ते कसं ओपन करायचं इकडे? एम एसमध्ये आहे का? पेपर 7 असेल आपलं ना? हे आहे आपला, म्हणजे डी टी आहे हे, आय डी टी असेल. सेक्शन बी म्हणजे आय डी टी आहे. हां हां सर, हां येस. थँक्यू. पण तिथे नाही येते ना? नाही येते मला. हॅलो, क्लास घेतोय मी तेवढ्याने करतो. 9:30 वाजता करतो. 9:30 वाजता क्लास घेतोय. मग कोणाला मागू मी? आदित्य वगैरे दिले का कोणी मला? हां ठीक आहे, ओके. Shall we start? Okay, so we are discussing income from house property. Okay, so under that we have seen this is the second income. Okay, like first is the salary income. Okay, on which direct taxation falls, and this is another thing. Okay, income from house property. So here concept is that building or land, okay, so term house property is not defined in the Income Tax Act. However, various judicial interpretation has construed the term house property as any land surrounded by wall, having roof or not. So if it is open plot also, that income from open plot, okay, so there are no walls, there is no roof, still it is considered as a income from house property. Okay, क्योंकि आप बोलोगे house बोले तो complete house, it should have a roof, it should have walls, okay, it should have 4 wall enclosure. It's not like that, concept is not like that. Okay, so without roof or with roof. Okay, so all that income from plot or from building, that will be come under this. Okay, तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसी ने अगर एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया, या आजकल तुम देखते हो ना कि बहुत जगह क्या बोलते हैं यार उसको, टर्फ डाल देते हैं, टर्फ. ओके, सो दैट प्रॉपर्टी विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ, दैट इनकम विल कंसिडर एज अ हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? ओके. If a building consists of several flats, then each flat is considered as a separate house property. ठीक है? बहुत जगह पे, यानी पुराना ज़माने में मुंबई में जितने भी लोग रहते थे ना, वो चाल सिस्टम था, चाल सिस्टम. तो एक चाल में अराउंड 40 ऐसे ड्वेलिंग हाउसेस, लाइक 1 रूम किचन, ओके, 1 रूम और एक किचन उसको लगा दैट. ओके, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट हाउस.
ओके अगर एक बिल्डिंग में आपके फ्लैट्स है या कई सारे फ्लैट्स है तो इट विल बी कंसिडर सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 लाइक दिस क्लियर incomplete ruined or demolished house cannot be termed as house property incomplete house it will not be considered or ruined or abandoned or demolished okay then we have seen the legal owner so legal owner means a person who has the legal title of the property as per the transfer of property act registration act etc okay and there is a one concept called beneficial owner okay so beneficial owner is the person who is collecting the rent or income is going to his bank account so he is called a beneficial owner so for income tax purpose it is not necessary that the property must be registered in the name of the assessee if the assessee enjoying the property if that assessee is enjoying the property as an owner to the full extent he will be treated as beneficial owner of such a property and will be charged under the head income from house property is that clear to you okay so fictional owner or deemed owner this concept is there under section 27 and there are 5 terms okay first one is the section 27(1) okay so here transfer to spouse or minor child बहुत बार लोग क्या करते हैं खुद का प्रॉपर्टी है ना वाइफ के नाम से ट्रांसफर करके रखते हैं या माइनर चाइल्ड के नाम से ट्रांसफर करके रखते हैं तो उनका इंटेंशन क्या रहता है कि मुझे इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा इसका so this is not the case okay why I'll tell you when an individual transfer a house property to his or her spouse not being a transfer in connection with an agreement to live apart okay so that agreement is different one okay so divorce cases और डिवोर्स केसेस में अपने को जो एलिमोनी देते हैं ओके नॉट एलिमोनी इज अ डाउरी ना डाउरी थिंग ओके हियर व्हाट यू गिव डिवोर्स केसेस में क्या उसका वर्ड क्या है आई फॉरगॉट दैट वर्ड एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन कैन टेल द वर्ड जो डिवोर्स केसेस में स्पाउस को देना पड़ता है दैट हाँ पोटगी इज अ मराठी वर्ड बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अरे बाप रे ऐसे कैसे क्या भूल गया आज मैं पता नहीं पोटगी इन इंग्लिश ना एलिमोनी यार माय वर्ड वाज राइट ओके माय वर्ड वाज राइट ओके so alimony so that alimony case agar hai to that is not treated as a 27(1) okay but without separation if he is allocating that property or transferring that property in his spouse name or her spouse name okay so or a minor child not being a married daughter without adequate consideration then transferor shall be treated as deemed owner of such a property transferor shall be treated as deemed owner who is the transferor the person who is transferring the property correct example Mr. X transfers his house property worth rupees 5 lakh to Mrs. X out of love and affection in such a case though Mrs. X is the legal owner but Mr. X will be liable to tax as deemed owner of the property clear ओके इज दैट क्लियर टू यू तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में आपको उसका इनकम टैक्स नहीं भरना है ओके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स नहीं भरना है तो क्या करना पड़ेगा हाँ गिफ्ट करो ओके सो ही ऑल्सो गिफ्टेड ही ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन स्टिल ही बिकम्स अ डीम्ड ओनर तो करोगे क्या तो जो भी रेंट आता है ना दैट शुड गो इन हर बैंक अकाउंट हिज स्पाउस बैंक अकाउंट क्लियर दैट इज द थिंग okay then
In case of transfer to spouse, marriage should subsist on both the days. That is on the day of the transfer as well as on the day when income arises. Okay. So, transferee must be a spouse or a minor child other than the married daughter. Transfer must be without adequate consideration. Transferred property must be a house property. Okay. Second case. Okay, deemed owner का second case is holder of impartial estate. Holder of impartial estate. Okay, so lot of probate cases. Probate, you understand? Last time मैंने बताया था probate. No? Execution of will. मृत्यूपत्रानंतर काय होतं की खूपदा प्रॉपर्टी जी आहे ती समजा एखादा माणूस आहे त्यांनी मृत्यूपत्र बनवून ठेवलं तर आफ्टर हिज डेथ दॅट प्रोबेट इज एक्झिक्युटेड ओके सो दॅट प्रॉपर्टी विल बी ट्रान्सफर्ड इन हिज सन्स ऑर डॉटर ऑर वाईफ ओके सो देर आर अ पार्टिशन पण ॲक्च्युअल तुम्ही असं करू शकता का पार्टिशन म्हणजे त्या घरामध्ये त्या घराला कापून तुम्ही एवढा पार्ट ओके 50% चलो ये डॉटर के नाम से 50% ऐसा नहीं कर सकता ना सो हाउ यू विल डू एंड हाउ इनकम टैक्स विल बी ट्रीटेड एनीवन इनकम टैक्स कैसा ट्रीट करेगा उसको हाँ नो HUF करता तो मर गया ना देन देयर विल बी अनदर फाइट HUF कौन बनेगा okay so we call this as a holder of impartial estate holder of impartial estate and this is the section 27(2) okay make a note okay so first one is the when transfer to spouse or minor child still you remain owner as a deemed owner okay though you have transferred okay second is that if you are the holder of an impartial estate okay so holder of impartial estate that is property which is not legally divisible जैसा मैंने आपको बताया ना probate execution so property legally तो तुम divisible नहीं कर सकते okay so in that case the owners यानी जो उसको rent ले रहे he will be treated as a deemed owner of house property जो भी rent लेगा ना he will be treated as a owner of the house property. Impartial estate is an estate to which the assessee has succeeded by grant or covenant. Right? Third, property held by a member of a company, society or any other association. That is section 27(3). So property held by a member of a company, cooperative society or other association of a person to whom a building or a part thereof is allotted or leased under house building scheme of the company or association is treated as a deemed owner of that building or a part thereof. Clear? Okay. So समझो एक कंपनी है कंपनी में हाउसिंग कॉलोनी बनाया उन्होंने ओके एंड दे हैव अलॉटेड यू हाउस ओके व्हाई बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ दैट कंपनी मेंबर मीन्स यू आर शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी ओके सो ऐसे टाइम में यू बिकम अ डीम ओनर ओके अगर तुमने कुछ हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी से यू आर कलेक्टिंग द रेंट यू बिकम अ डीम ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी ओके तुम नहीं बोल सकते कि अरे ये तो कंपनी के नाम से है तो कंपनी को बोलो इनकम टैक्स भरने को और मैं रेंट लेते रहूंगा नो इट्स नॉट अ केस क्लियर दिस इज द थर्ड केस ओके 27(3). Then fourth one, a person who acquired a property under section 53A of the Transfer of Property Act. Okay, this is section 27(3)(A). Okay, so this is the subpart of section 27(3). Section 27(3) क्या था? So that is a property held by a member of company, society or any other association. Okay, उसके ये subpart है. Okay, so person who acquired a property under section 53A. So person who allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part performance of a contract under section 53A of the Transfer of Property Act
1882 is deemed as the owner of the building or the part thereof. Okay. And last one is the lessee of a building under section 269 UAF. Lessee of building. So person who acquires any right under section 269 UAF in or with respect to any building or part thereof by way of lease agreement for a period not less than 12 years is deemed as the owner of that building or part thereof. Okay. So माड़ा या सिडको यहाँ से आपने लीज पे लिया है. ओके. और निगड़ी प्राधिकरण लीज पे लिया है. ओके. एंड दैट प्रॉपर्टी यू आर गेटिंग अ रेंट. So you becomes a lessee of a building, okay, under section 269 UA, okay. And third condition is property is not used for a business or profession carried out by the assessee, okay. So when a person carries on business or profession in his own house property, annual value thereof is not taxable under section 22. यहाँ पे exemption है उसको. Okay, why? Because that building will be treated as a his own factory building or तो ये कहा जाएगा next इसमें profit or gains of, तो उसका जो maintenance cost है. Okay, here what we are doing, we are giving a 1/3 as a 1/3 cost as a benefit to him. Okay, जो property tax भरना पड़ता है और जो maintenance है उसके लिए 1/3 value of that, okay, we are granting him, okay, as a cost. और उतना annual value हम कम कर रहे हैं building का. Okay, तो जो भी रेंट मिलता है उसमें से उतने माइनस करके 1/3 पार्ट माइनस करके बचा हुआ जो 66% है, 66.67% है, तो that becomes a taxable. Okay, but when he is using it as for his own building, for his own क्या बोलते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग, okay, so then it won't be treated. Okay, उसको ये कंसेशन नहीं मिलेगा. Okay, so that will go in a next level, that is the profit and gains of business. Clear? Incidences thereof letting out to employees. Okay, मैं आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था. ये शुगर इंडस्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में का, दे आर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. Okay, so each sugar industry is a cooperative साकर कारखाना, okay, सहकारी साकर कारखाना limited, okay, and that license under cooperative act is given by the Maharashtra state. Okay, now what they are doing, they are constructing a colony and all their chief accountant, their MD, okay, their chief chemist, they are residing over there. Okay, ये कॉलोनी बनता है और उधर ही रहते हैं वो लोग, है ना. तो ये कॉलोनी जो है लेटिंग आउट टू एम्प्लॉयज, नाउ दे आर लेटिंग इट टू द एम्प्लॉयज. सो इफ एन assessee lets out his property to his employees where such a letting out supports smooth flow of his business, then such a letting out shall be deemed to be incidental to business and such a rent shall be chargeable under the head profit and gains of business or profession. तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम करके आएगा नहीं उनको, not for employee also and not for that company also. Clear? Clear? Then letting out to government agencies. So of course government has that much power. Okay, so whenever you let it out to government, when the assessee let out his property to any government agency for locating branch of nationalized bank, police station, post office, excise office, railway staff quarters, etc., for the purpose of running the business of assessee more efficiently, such a letting out shall be deemed to be incidental to the business and such a rent shall be chargeable under the head profit and gains of a business or profession. Okay, ये सबसे बड़ा फायदा है. Okay, why people they prefer banks? You know, bank आपको पता है ना, bank they do not buy office, their own building they do not buy. ओके, वो क्या करते हैं, रेंट आउट. हमेशा कोई भी बैंक आप देखो, नेशनलाइज बैंक, ओके, तो जो जहाँ पे भी वो रेंट आउट करते हैं ना, तो दैट रेंटिंग आउट उसको जो फायदा होता है ना, जो ओनर है उसको क्या फायदा होता है, ही इज कलेक्टिंग द रेंट. ओके, लेकिन 66.67 पे उसको टैक्स नहीं भरना है.
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं भरना है. ओके, ही इज शोइंग इट एज अ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस. ओके, व्हाई? बिकॉज ही हैज लेट इट आउट टू द गवर्नमेंट एजेंसीज. बैंक इज द गवर्नमेंट एजेंसी. तो उसमें कौन कौन आया? बैंक आया, LIC ऑफिस आया, एक्साइज ऑफिस आया, पोस्ट ऑफिस आया, सेल टैक्स वाले आ गए, सारे. क्लियर? तो नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी में आए. एकदम सही. एंड दे हैव गॉट द परमिशन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन ऑफिसेस. आप अगर आंध्र कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो यू विल फाइंड ICICI का बिग बिल्डिंग इज देयर. बड़ा बिल्डिंग है एकदम ICICI का. दे हैव अ बिल्डिंग ऑफ सिटी बैंक. ओके, they have an office of Axis Bank, own building of Axis Bank. But why these buildings are there? Because private banks can construct their own offices. Clear? Okay. Then letting out to ancillary unit. When an assessee lets out property to ancillary units which manufactures component required by the assessee, income from such a letting out shall be taxable under the heads of profit, gains of business or profession. Okay. बहुत बार आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ओके, तो उनके जो वेंडर रहते हैं ना, दे फॉर्म अ क्लस्टर. समझो मैं एक बड़ा कंपनी हूँ. ओके, आई हैव अराउंड 200-300 वेंडर्स. Okay, and I have a big space just like Tata Motors. Okay, so they can let out that space to their vendors कि मुझे जो लगता है material that you manufacture at my place and supply it to me, we call them as a ancillary units. Okay, so ancillary unit के लिए भी जो property मैं दे रहा हूँ, so that will not be the income from house property. Okay, that will go in profit and gains of business. Clear? Okay. Then some special cases also we will discuss. Foreign property. If the house property is situated abroad, then the annual value of such a property shall be taxable as, okay, if assessee is ordinary resident. Okay, so condition for taxability, it is always taxable. Okay, and if he is not ordinary resident or non-resident, income must be received in India, then only it become a taxable. Okay, so you must be knowing कि अभी ये politicians क्या करते हैं कि इनके बड़े बड़े hotels होते हैं. Okay, कहाँ होते हैं? लंदन में या फिर पेरिस में. Okay, so they owns this property. Okay, अभी उसका he is ordinary resident, वो तो इंडिया में रह रहा है. ओके, सो इट बिकम्स अ टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल ओवर. व्हाई? बिकॉज ही इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओवर. क्लियर? आपने सुने भी होंगे ना ऐसे न्यूज. ओके, बीइंग फाइनेंस पर्सन्स एंड यू हैव टू बी अलर्ट. ओके, तो आपको पता होगा ना कि अभी एक बीच में एक ये हुआ था कि जब भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे हमारे, उनका लड़का, तो उनका एक उधर होटल था. कहाँ पे? लंदन में. ओके, अभी ये खबर कैसी लगती है? तो बिकॉज इट बिकम्स टैक्सेबल. ओके, दैट इनकम बिकम्स अ टैक्सेबल. ओके, तो ये एक चस्का लगना चाहिए आपको बीइंग फाइनेंस गाइस कि किसका किधर क्या क्या प्रॉपर्टी है. हैव यू रेड? अभी जब भी वो खड़ा रहता है ना, दैट टाइम ही हैज टू सबमिट वन स्टेटमेंट कि मेरा एसेट्स कहाँ कहाँ पे. ओके, सो यू हैव टू रीड दैट और आपको पता लगेगा कि कितना सारा इनकम है, कितना प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग. ओके, सो अभी इतना स्ट्रिक्ट हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन केयर ऑफ दिस कि जब भी कभी वो खड़ा रहेगा दैट टाइम ही हैज टू गिव दैट स्टेटमेंट. और बहुत बार लोग तो वो डर से खड़े नहीं रहते कि इट विल बी डिस्क्लोज हो क्या क्या है मेरे पास. ओके, then case is of disputed ownership. So merely due to dispute regarding the title of property, assessment cannot be postponed.
Okay, so in such a cases, person who is in receipt of income or who enjoys the possession of the property is accessible to the tax. Okay, possession of the property is accessible to tax. Then composite rent. So together with rent of the building, if the owner gets charges for the other services or rent of other assets provided in the building like furniture, machinery, etc., amount so received is termed as a composite rent. Okay, composite rent is equal to rent for building plus rent for assets plus or charges for various services. Now I'll tell the story. One of my friend, okay, so he he purchased one building में का एक floor उसने खरीद लिया मेरे दोस्त ने, okay, and that floor is given to the IT company on a rent, but additionally he has given lot of laptops and computers and networking infrastructure, okay, वो भी उसने hire कर दिया. Okay, so now he is raising two invoices. Okay, so one for a rent of the space and another for renting of those laptops, computers, desktops and other infrastructure. Okay, server वगैरह सब बना के दे दिया उसने. Okay, तो ऐसे केस में he is showing income from house property यानी क्या? Only rent. No, that is not the case. Why? Because renting of laptop infrastructure ये जो आप दे रहे हैं ना उनको, that becomes a composite rent. Clear? तो लोग इसमें ना खेलते हैं, कैसा खेलते हैं कि I will show rent as a very less, okay, और इसका रेंट मैं बढ़ा दूंगा, okay, उसको क्या, उसको तो उतना ही रेंट देना है ना, कंपोजिट रेंट उसको पे करना है, तो कंपोजिट रेंट में I will show some part as a rent from house property and some part as a, so ऐसा नहीं चलता है. तो जो भी आप पूरा जितना वो वेंडर से आएगा that will become a rent amount, that will become a rent amount. ठीक है, clear? So this is the concept of composite rent. So tax treatment of composite rent is as follow: rent including charges for amenities or service like garden facility, food, lighting, etc., or other separable assets like machinery, plant and furniture. So if the owner of the house property gets composite rent for both property as well as services render or other separable assets, such a composite rent shall be treated as under: some received for the use of building that goes as a income from house property, some received for other amenities or other separable asset that becomes a profit and gains of business or profession or income from other sources. This is a taxable head. Okay, this becomes a taxable head for this. Okay, however, if segregation of composite rent is not possible, ये याद रखो, then the whole amount will be taxed either under the head profits and gains of business or profession or income from other sources. फिर उसको ये benefit ही नहीं मिलेगा. कौन सा? Income from house property. ठीक है, ये composite rent में आपको याद रखना है हमेशा. If it is not possible segregation, then आप नहीं कर सकते उसको. So that's why we are saying, means I advise him to make a two invoices separately. एक invoice बनाओ rent के लिए, दूसरा invoice बनाओ. Okay, so that part will go to the, okay, that part will go, composite part का जो part है दूसरा जो assets वगैरह आ रहा है, that will go in profit or gains from business, and जो एक invoice बन रहा है that is only for rent, that will become a house property, income from house property. Okay. Okay, then next section is the co-ownership. So if two or more persons own a house property jointly, then they are known as co-owners. So if the individual share of each co-owner is definite and ascertainable, then the share of each such a person shall be taxable as his income from house property. Okay. Okay. So tax treatment: share of each co-owner in the income from the house property as computed in accordance with section 22 to 25 shall be included in his total income. And where the house property is owned by co-owners and is occupied by each of the co-owner, then all of them can claim benefit under section 23 2A
and interest on loan shall be allowed to all co-owners to the extent of rupees 30,000 to 2 lakh as the case may be. Okay, you know that ये जो सेक्शन कितना था, ये 10 ना, नहीं 26, इसमें ना जैसा हम घर क्यों खरीदते हैं, EMI जो रहता है तो उसमें का इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना, वी गेट अप टू 2 लाख रुपीस. ओके, ये तो वी शो इट अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. वहाँ पे हम फिगर कितना डालते हैं, -2 लाख. ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज अ लॉस ना, आई एम पेइंग अ इंटरेस्ट. ओके, तो सेपरेट कॉलम रहते हैं, रेंट कलेक्टेड, तो उसमें आप 0 रखते हैं बिकॉज यू आर रिसाइडिंग इन दैट हाउस. ओके, एंड अनदर कॉलम इज दैट एक्सपेंसेस, ओके, और इंटरेस्ट इनकर्ड, तो वहाँ पे आप लिख देते हैं -2 लाख. ओके, सो दैट इज अलाउड, अप टू 2 लाख इट इज अलाउड. ओके, लेकिन उसमें को ओनर है समझो, एंड शेयर इज 50-50%. तो इंटरेस्ट का, और उन्होंने 2 लाख का इंटरेस्ट भरा हुआ है, EMI में दोनों का पार्ट है. ओके, तो 2 लाख उन्होंने भरा हुआ है, 50-50% है, तो ऐसे केस में क्या होएगा, 1 पर्सन विल गेट 1 लाख रुपीज. ओके, बेनिफिट कितना पास ऑन हो जाएगा, 1 लाख टू 1 पर्सन एंड 1 लाख टू अनदर पर्सन. Then partners property used by the firm. The business carried on by the firm should be regarded as carried on by all the partners. Thus annual letting value of a property belonging to the assessee which is in occupation of the firm in which assessee is the partner is not includable in income of the assessee partner under section 22. Okay. So these are all exempted properties. Okay, exempted बोले तो income from following house properties are exempted from tax. Exempted from tax. कौन कौन से property है? Any one palace or a part thereof, an ex-ruler, provided the same is not let out. Okay, is not let out. हाँ, ये भी याद रखना है. Any one palace or part thereof of ex-ruler. Okay. So if the ex-ruler has a house property and a part of which is self-occupied and the remaining let out, then only the self-occupied part of the house property shall be exempted. Okay. Then house property of local authority. Local authority like PCMC. PCMC. Okay. So their house property. Okay. So that is exempted. House property of approved scientific research association. Okay, so that is also exempted. Like यहाँ पे हमारा बाजू में एक है. ओके, कौन सा क्या बोलते हैं हम उसको, एक साइंस का भी, साइंस पार्क. ओके, और साइंस पार्क के एग्जैक्ट सामने एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमारे फंक्शन भी होते हैं. तो दैट प्रॉपर, उसको क्या, कौन सा हॉल बोलते हैं हम? हाँ, पता नहीं आजकल मैं क्यों भूल रहा हूँ ये सारा. जहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं अपने बहुत सारे CMA के. हाँ, कोणते क्लस्टर है? 7 नाही ना तसं. Anyway, I'm not remembering. ठीक है. Okay, then house property of educational institution. Okay, so ये भी exempted property है. House property of a hospital. Okay, so these are all section 10. Okay, main section is a section 10. House property of a person being resident of Ladakh. ये भी याद रखना है आपको. Okay, ये आपको इसमें MCQ में पूछ सकते हैं. ठीक है. So house property of a political party. Okay, then house property of a trade union, a farmhouse, house property held for charitable purpose, house property used for own business or profession. So these are all exempted properties.
लद्दाख को हमने जैसे सिक्किम को एक स्पेशल ये दिया हुआ है ना, वैसा लद्दाख भी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। तो इसलिए वो लद्दाख भी आ रहा है उसमें। पुराना है, पुराना है, खाली लद्दाख को। टैक्सेशन हैज नो क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक, ओके। सो ये शायद इसलिए क्या होगा, यानी दैट इज ऑल्सो माई गेस, ओके, नॉट अ प्रॉपर लॉजिक। लद्दाख में जाके लोगों ने कुछ घर बनाने चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, उधर का टूरिज्म बढ़ना चाहिए, इसके लिए किया होगा ये शायद, ओके। क्योंकि क्या होगा अगर एग्जेम्प्टेड बोला तो पीपल विल, बिकॉज पीपल आर वेरी savvy, सो दे स्टडी ऑल दिस कि किधर उनको चांस है, ओके, एंड दे कैन ओपन अ होटल ओवर देयर, ओके। और होटल से अच्छा वो होटल में कैसा कोई लेट आउट करके वगैरह वो कमा लेंगे बहुत सारा। एंड जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक क्यों नहीं, उसका भी नाम इधर आता था लेकिन नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे आप कर ही नहीं सकते जब तक ये सेक्शन 370 वॉज देयर, ओके। तो इट वॉज नॉट अलाउड। अभी तो उन्होंने स्क्रैप किया है, लेकिन बट दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन अ परमिशन अभी दूसरों लोगों को ज़मीन लेने के लिए। सो स्टिल इट इज़ इन अबेंस कि अभी तक हुआ नहीं है उसको ऐसा। Computation of income, okay, the chapter is divided into the following categories for the purpose of computation: let out properties, then self occupied properties. So one by one we'll find out कि उस पर taxation कैसा होता है, okay. So पहला हम लेते हैं let out property, section 23(1). let out property, so first of all we find out gross annual value. सिंपल है, इसमें जितना रेंट आप कलेक्ट कर रहे हो इंटू 12 months, मंथली रेंट यू आर कलेक्टिंग इंटू 12 months, okay. So that will become your gross annual value, okay. Then less municipal taxes, you will get a net annual value, NAV, okay. Then you have to less deduction, so 24A, that is a standard deduction, that is a 30% of NAV, okay. So this is allowed for any taxes you are paying, municipal taxes, you are paying maintenance, okay. So 30% is allowed straight away, clear. Less interest on borrowed capital, so that is at section 24B. So you will get an income from house property. हमेशा याद रहेगा, ये सिंपल है, GAV से स्टार्ट करने का है। लेस क्या करोगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस मिलेगा आपको NAV, ओके। लेस डिडक्शन, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, एंड लेस इंटरेस्ट ऑन borrowed capital, ओके। सो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं दैट इज टेकन केयर ऑफ हियर अंडर सेक्शन 24, deduction under section 24, okay. Thank you. Okay. Okay, many times annual value of the property decided by municipality on which they charge municipal tax. So such a valuation may also be taken as evidence of earning capacity of the property. In metro cities, Chennai, Delhi, Kolkata, Mumbai, चार ही metro cities है as per Income Tax Act, okay. Municipal authorities charge tax on net municipal value, okay. तो NAV पे यानी net municipal value after giving a deduction for repairs being 10% of gross municipal value, and allowance for services taxes like sewerage tax, water tax, etc. as a percentage of net municipal value. Hence the relation between gross municipal value, gross is GMV, and net municipal value can be concluded as under NMV, that is a net municipal value is equal to gross municipal value minus 10% of GMV, so 90% GMV basically, minus sewerage, water tax, etc. as a percentage of NMV, okay. And in non-metro cities GMV is equal to NMV. तो आपको ये फायदा ही नहीं है,
फायदा किधर है, मेट्रो सिटी में. ओके जो टैक्सेशन का जो है सीवरेज वाटर टैक्स, ओके एंड 90% ऑफ GMV वैल्यू. ओके सो दैट बेनिफिट लाइज विथ मेट्रो सिटीज, नॉट फॉर नॉन मेट्रो. नॉट मेट्रो में सिंपल लॉजिक है, GMV इज इक्वल टू NMV. Then concept is fair or notional rent of the property. Okay so if property was let out to friend for a monthly rent of 2000, which might be let out to another person at the rate of 2500, in such a case the fair rent of property shall be 2500. okay so normal fair value निकालना है हमको. okay हमने फ्रेंड को दे दिया इसलिए लेस किया और एक्चुअल रेंट मेरे को 2000 मिला, तो साल का कितना हो गया, तो कितना हो गया 24,000 है ना. सो दैट विल बिकम माय नोशनल रेंट. नो, बिकॉज इन दैट एरिया नोशनल रेंट इज 2500. ओके 2500 इंटू 12 कितना होता है 30,000 राइट. ओके सो 30,000 विल बी द रेंट. ठीक है 30,000 विल बी द नोशनल रेंट, फेयर रेंट. And always you have to take a higher thing, like if gross municipal value is higher than your rent, okay so you have to consider gross municipal value. okay if your rent is more than gross municipal value, then you have to take a rent. okay total rent, fair rent. okay so you have to consider the higher of. अभी हम illustration 39 करेंगे, that is a computation of reasonable expected rent, and I will make you understand all this. okay तो before that I will take a 5 minutes break. अभी कितना 7:22 होता है ना, तो 7:22 plus 27:28 को हम चालू करते हैं. okay so online guys there is a 5-minute break now.
Hello. Okay, we'll start. Okay. So this illustration 39. Okay. So what I'm telling you, you have to compare GMV, that is a gross municipal value, and fair rent. Okay. So out of that, whichever will be higher, that you have to select. Okay. And there is one concept called as standard rent. Okay, so standard rent is always the maximum rent, okay, for particularly for that area. Okay, so this standard rent as per Rent Control Act, this is a separate act in India, Rent Control Act. Okay, so standard rent is the maximum rent which a person can legally recover from his tenant under the Rent Control Act, okay, prevailing in the state in which the property is situated. A landlord cannot reasonably expect to receive from a tenant any amount more than the standard rent. More amount than the standard rate. For income tax purpose, अगर उसको मिलता भी है more rent than the standard rent, so which will you consider? Huh? Standard rent, yes. You have to consider the standard rent. Okay. क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही ये है. ओके, सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो बनेगा, ओके, दैट विल बी द लोअर ऑफ ए एंड बी. ओके, लोअर ऑफ ए एंड बी. ओके, सो स्टैंडर्ड रेंट को हम मैक्सिमम मान के चलते हैं. ओके, आपको एक्चुअल भी ज़्यादा मिल गया तभी स्टिल यू हैव टू कंसिडर दैट स्टैंडर्ड रेंट एज अ बीइंग लोअर, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. ओके, ठीक है. तो चलो पहला हाउस नंबर 1 देखते हैं. हाउस नंबर 1 10,000, फेयर रेंट इज 8,000. तो कौन सा लोगे तुम? 10,000, है ना. सो हायर ऑफ ए एंड बी 10,000. ओके, देन स्टैंडर्ड रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट, दैट इज ऑल्सो 10,000. ओके, सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट दैट बिकम्स एट 10,000. केस 2, हाउस 2. हाउस 2 में क्या हो रहा है? GMV कितना है? 12,000. फेयर रेंट कितना है? 16,000. कौन सा लोगे अभी? 16,000. ओके, 16,000 विल बी कंसिडर. नाउ स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट इज 14,000. ओके, सो एक्सपेक्टेड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी द 14,000. क्लियर? क्लियर? हाउस नंबर 3. अभी स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट available. Okay, not available. So in that case you have to consider that 16,000. Okay, तुम not available बोलोगे, जीरो नहीं लेने का है. Clear? Okay, next case, house number 4, 18,000 and 10,000. So higher of that 18,000. Okay, 18,000 will be selected. Standard rent is 8,000. So reasonable expected rent is 8,000. Clear? House number 5, 16,000, 17,000. 17,000 is selected, higher of this. Okay, standard rent at 20,000. So lower of this, so 17,000. Standard rent से कम अगर rent मिलता है तो that rent you will take simply. Okay, so यहाँ पे concept क्या बोलता है कि standard rate is maximum. उसके ऊपर नहीं जा सकते. तो मिलता भी होगा तभी इनकम टैक्स में आपको स्टैंडर्ड रेंट ही लोअर ऑफ दैट स्टैंडर्ड रेंट लेना है उसको. हाँ, okay, but it is available in case of a metro cities. If it is a metro city, it is always available. Okay, so जैसे हमारे लैंड रेकनर रेट, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, रेकनर रेट्स? Okay, so PCMC, our municipal corporation, they release the reckoner rates every year. Okay, they releases it. Okay, और इस पे क्या होता है? One duty they collect. Okay, that is called the stamp duty. Okay, so in Maharashtra stamp duty is 6%, around 6%, 5 to 6%, 7%. Okay, ये रेंज में वो चलती रहती है.
ओके तो ये स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन करने के लिए ये स्टैम्प ड्यूटी किस पे कलेक्ट की जाती है, वैल्यूएशन पे, एंड फॉर वैल्यूएशन दे रिलीजेस द रेकनर रेट्स, ओके रेकनर रेट्स। लेकिन आप जैसे जैसे मेट्रो सिटीज में जाओगे ना तो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर जो रेंट है ना स्टैंडर्ड रेट, दैट चार्ट आर आल्सो अवेलेबल टू यू। ओके यहाँ पे मुझे पता नहीं, पिंपरी चिंचवड़ में मेरे को, मैंने देखा भी नहीं है ये चार्ट्स, ओके और सुना भी नहीं है, लेकिन इफ यू विल गो टू मुंबई दिस चार्ट्स आर अवेलेबल अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, ओके। And if it is not available, so that in that case, that 16,000 wala case, house number 3, correct? So that time what you will do, जो भी fair rent है, that will become your reasonable expected rent, that will become your reasonable expected rent, ठीक है? Okay, then illustration number 40, when there is neither unrealized rent nor vacancy period, okay, so calculate gross annual value for the following house property. Gross annual value निकालने का है, so gross annual value for the whole year, that is H1, ये एक मिनट, H1 H2 क्या है, house 1, okay sorry, okay. Normally H1 term we use for a half year, जैसा Q1 quarter 1 quarter 2 quarter 3, ऐसा H1 H2 for a financial year first half year, that is considered H1, तो इसलिए मैं confuse हो गया इधर, okay. So these are also house number 1 2 house number 2 house number 3 ऐसा है, okay. So gross municipal value for the whole year, so that is a 120, then fair rent for the whole year, that is a 105, okay. So standard rent for the whole year, so that is not available. Actual rent receivable is 100, period of the previous year in months, that is a 12, okay. अभी हमको gross annual value निकालने का है, okay. So क्या होगा कि 120 and 10, so higher of that, higher will be the 120, right? Higher will be the 120 पहले केस में, okay. Then reasonable expected rent, okay, so 120, why? Because NA, that standard rent is NA, okay, तो उसमें का कौन सा लोअर है, तो 120, okay. So gross annual value ARR दिया है क्या उसने, हाँ, actual rent receivable is 100 over here, okay. So उसमें से कौन जो वैल्यू पड़ी है, okay, 120 and 100, so that becomes a 120, so gross annual value will become the 120, clear? अभी इसमें आपको किधर कंफ्यूजन होगा, that is the house number 6, house number 6, नहीं हाउस नंबर 6 में भी नहीं कंफ्यूजन है कुछ भी, हाँ होगा होगा, करेक्ट. वाई हाउस नंबर 6 का स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 144, राइट, ओके. और यहाँ पे देखोगे तो 120 लिया हुआ है इसने, ओके. दिस इज अ कंफ्यूजन, यहाँ पे 120 क्यों आया होगा, वाई, बिकॉज आई विल टेल यू. यहाँ पे जितने भी पीरियड आप देखोगे ना 12 मंथ से, ओके, और यहाँ पे कितना है 10 मंथ, ओके. सो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो स्टैंडर्ड रेंट फॉर द होल ईयर 144 है ना, तो 10 मंथ्स के लिए कितना बनेगा, 120, and that's why 120 will be taken over. Clear? Clear? Okay. इस तरह आपको ये इलस्ट्रेशन 41, 42 ये सारे करने हैं, ओके.
and if there is a difficulty 43, so you have to come back to me. ये सारा आपके लिए होमवर्क है, ओके? Now I'll go to the deduction under section 24. Okay, so there is one deduction that is called a standard deduction. That is 30%. Very good, 30%. Okay, and another is the interest on loan. So here limit is 2 lakh. Okay, limit is 2 lakh. So list of deduction under section 24 is exhaustive. Okay. So no deduction can be claimed in respect of expenditure which are not specified under this section. No deduction is allowed for repairs, collection charges, insurance, ground rent, land revenue, etc. So you can't say that कि मेरा इससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है 30%. Okay, government has fixed this norm. तुम्हारा कुछ भी खर्चा होने दो, okay, you will be charged with a 30% only. Okay, so standard deduction is 30% of net annual value is allowed as standard deduction in respect of all expenditure other than interest on. एक ही बचता है, that is the interest on borrowed capital. Okay, that is a separate one. Okay, so that is called section 24B. Okay, and for all deductions, okay, there is allowed limit is 30%. Allowed limit is 30%. Okay. Now calculate standard deduction available in the following cases. Okay. और 30% किसका लेने का है आपको? NAV का, नेट एनुअल वैल्यू. ये हमेशा याद रखना, 30% ऑफ NAV. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिराइव NAV. ओके, कैसा निकालोगे? वेरी गुड, 90% GAV, that becomes NAV in metro cities. ओके. अरे हॅलो, मी शिकवतोय, मी नंतर फोन करेल, फोन नंतर करेल 9:30 नंतर. Okay, so here gross annual value GAV is given 80. Okay, municipal taxes paid is 10, repair charges 2, rent collection charges 5. कितना बनता है? 10 plus 2 plus 5 कितना हो गया? 17. हाउस नंबर 1. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग यूज़ करने का है आपको, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने का है. कैलकुलेटर में कहीं बटन प्रेस हो गया ना, गलती से मिस्टेक हो सकता है. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर. एक्सेल जब करते हो ना, तब आपको दिखते रहता फिगर्स, फार्मूला क्या डाल रहे हो, वो इसमें नहीं रहता है कैलकुलेटर में. तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेरीफाई करते चलो जो आपने किया हुआ है उसको. ओके, दिमाग से. या बोलो. कितना आ रहा है? NAV निकाला क्या तुमने? देखो कैसा करोगे बताता हूं मैं. 80, ठीक है, माइनस 10. ओके, तो हो गया 70. ओके, 7 त्रिक 21 ना, मग झाला ना 21,000. 30% ऑफ दॅट 70,000च. त्याचं काय सांग, NAV आलं की त्याला 30% करायचं बस. ओके, सेपरेटली तू काही त्याच्यातून मायनस करू शकत नाही. ओके, फक्त सिवरेज अँड वॉटर वेन यू आर देअर इन मेट्रो सिटीज. मेट्रो सिटीज इथे काही दिलेलं नाही आहे ना, खतम. त्यामुळे ते नॉन मेट्रो कन्सिडर करून चालायचं सगळं. ओके,
Then interest payable on amount borrowed for the purpose of purchase, construction, renovation, repairing, extension, renewal or reconstruction of house property can be claimed as a deduction on accrual basis. Okay, for the purpose of calculation, interest on loan is divided into two parts. Okay, so standard deduction that so standard deduction में और एक आ सकता है, that is the pre-construction period, means period starting from the day of commencement of construction or the day of borrowing, whichever is later, and ending on 31st March immediately prior to the year of completion of construction. Okay, so X has taken a loan on 1/4/1998 for construction of house property. Construction started on 1/6/2000 and completed on 17/8/2011. In such case, pre-construction period will be a period starting from 1/6/2000. Why? Whichever is later. Whichever is the later. Okay, 1/6/2000 and ending on 31st/3/2011. ओके, जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वो तभी ये पीरियड खत्म हो गया. ओके, सो ट्रीटमेंट विल बी इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड टू द एक्सटेंट इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी accumulated and claimed as a deduction over a period of 5 continuous year in equal installment commencing from the year of जो जितने भी प्री ऑक्यूपेशन यानी ऑक्यूपेशन बोले तो प्री तुम रहने के लिए जा रहे हो घर में, तो उसके पहले के जितने भी EMI है. ओके ओके, एक्चुअल आपका EMI कब स्टार्ट होता है? व्हेन यू परचेज दैट प्रॉपर्टी. ओके, और जब भी जो दे रहे हैं इंटरेस्ट, ओके, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ओवर हियर. ओके, सो 20% ऑफ दैट यू कैन क्लेम. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू सेट अप इन 5 कंटिन्यूअस ईयर्स. ओके, तो तुमने 1 लाख रुपए समझो किया है, तुमने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में ही है. ओके, तुमने ऑक्युपाई नहीं किया है उसको, अभी गए ही नहीं रहने के लिए. ओके, और ऐसे टाइम तुमने उसमें का 2 लाख रुपए समझो 1 लाख रुपए भरा है एज ए इंटरेस्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि EMI कब स्टार्ट होगा? जब भी तुम उसको रहने के लिए जाओगे. बिफोर दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रक्शन. ओके, सो ऐसे टाइम 20% ऑफ दैट कितना बनेगा? 20,000 है ना, 1 लाख का 20%. सो दैट यू कैन कंसिडर इन दैट ईयर सिर्फ 20,000. ओके, बिकॉज यू हैव टू सेट ऑफ इट इन 5 years. ठीक है, फिर दूसरे साल में मान लो आप रहने को गए, EMI स्टार्ट हो गया, सो दैट इंटरेस्ट फुल्ली यू कैन टेक 100% प्लस 20% ऑफ दिस. क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, चलता रहेगा ये 5 साल तक चलता रहेगा. अमाउंट का लिमिट है 2 लाख तक. समझ गए ना? अभी दूसरे ईयर में आपने इंटरेस्ट पे किया 1.5 लाख रुपए. ओके, तो आपको लिमिट कितना मिल जाएगा? 1.5 लाख रुपया प्लस 20,000 फ्रॉम दिस. करेक्ट? सो देयर आर 2 sections, सेपरेट sections. एक है 24B. ओके, तो 1.5 लाख रुपए तुम्हारा इधर आ जाएगा. ओके, और जो 20,000 था वो इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन में. ओके, क्लियर? हाँ हाँ, 2 लाख लिमिट है, 2 लाख. Okay, so post construction period means the period starting from the beginning of the year in which construction is completed and continues until the loan is repaid. So it can be fully claimed as a deduction in the respective years. Okay, in the given example, post construction period will start from 1/4/2011. So that's why possession, date of possession is very very important for an income tax act, for income tax act. Clear? Okay. अभी आपको समझ गया होगा कि लोग रेडी पोजीशन क्यों मांगते हैं. 1 लाख बराबर ना, 12 लाख होगा ना, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना बनेगा?
2.5 लाख. ओके तो 2.5 लाख ऐसा आपको 2.5 लाख ही होगा नहीं. हाँ 12 लाख थोड़ा कम होगा. 2.5 लाख से थोड़ा कम होगा. हाँ हाँ 2,40,000. 2,40,000 2.5 लाख नहीं एग्जैक्ट नहीं. 2,40,000. तो ऐसा सेटअप करते जाना पड़ेगा एवरी ईयर आपको. अंडरस्टैंड. 2.5 लाख मिलेगा सिर्फ. गया कितना है 12 लाख. ओके that's why it is preferred. Ready possession is preferred कभी भी. Okay because you get a full advantage of interest. Okay देखो अभी ये एक एग्जांपल देखते हैं हम. इलस्ट्रेशन 48. ओके सो दिस प्रॉपर्टी HP1 हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1. ओके सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर. 2 loans are there. One for purchase. Okay one is for purchasing house property, another is for repair of house property. So that interest कितना है 20,000. another interest is 20,000. ओके ये क्या है 50% पेड है. ओके देन इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन फॉर रीपेइंग ओल्ड लोन विच वाज टेकन फॉर परचेसिंग हाउस प्रॉपर्टी. ओके सो दैट इज अ 10,000. क्लियर. फोर्थ वन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन. ओके इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन. सो दैट इज ऑल्सो 10,000. सो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स दैट इज 2,000. ओके then interest on loan by mortgaging HP3 for business purpose. Okay so that is nil here for house property. Okay because that will be only for house property number 3. Then interest on loan for reconstruction of HP1 paid outside India without deducting TDS. Okay so that is 20,000. and interest on loan for reconstruction of HP2 so it will come for HP2. Okay interest on loan on mortgage HP1 for renovation of HP2 so that is HP1 के लिए 10,000 आ जाएगा. Okay mortgage किया ना वो इसके लिए. now calculation of interest allowed under section 24. this is very important. अभी कौन कौन सा allowed है. so repair of house property allowed or not. allowed. okay okay so house property में कितना हो जाएगा वो 20,000. okay so it is allowed. then interest on loan taken for purchasing house property तो only one property is allowed. समझ रहे हो only one property is allowed. okay so one property is allowed so HP1 so it is 20,000 purchasing house property. तो इतने सारे लोन लिए उसने purchasing के लिए. okay then interest on new loan. अभी ये ओल्ड लोन जो था उसका इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेसिंग हाउस प्रॉपर्टी इधर कितना किया उसने 50% पेड कर दिया. ओके सो दैट वाज 20,000. सो दैट इज दैट गॉट अलाउड. ओके एक प्रॉपर्टी अलाउड है. और इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन फॉर रिपेइंग ओल्ड लोन विच वाज टेकन फॉर परचेसिंग हाउस प्रॉपर्टी 1 सो दैट इज ऑल्सो अलाउड. ओके सो 10,000 इज ऑल्सो अलाउड. ओके देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन लिया दैट इज नॉट अलाउड. ओके दैट इज नॉट अलाउड. ओके देन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स नेवर अलाउड. टैक्स पे करने के लिए कोई लोन ले रहा होगा तो दैट इज नॉट अलाउड. ओके सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मॉर्गेजिंग HP3 तो आएगा ही नहीं इधर. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ HP1 पेड आउटसाइड इंडिया. ओके एंड विदाउट डिडक्टिंग TDS वो भी हमारा नहीं है. ओके पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया.
देन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ HP2, वो इसको अलाउड आएगा ही नहीं. Okay, so interest on loan on mortgage of HP1 for renovation of HP2, so that will come for HP2, not for this. Okay, so बचा कितना हो जाएगा टोटल? 20 20 plus 10, that is a 50. So 50 will be the answer. Clear? So what is allowed? क्या क्या allowed है? For purchasing and for repairs. Yes, very good. Okay. और तुम ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यू कैन शिफ्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस 10 इज आल्सो अलाउड. क्लियर? या क्या किया उसने? एक का रीपे कर दिया, ओके, और दूसरा का स्टार्ट कर दिया EMI, तो दैट इज अलाउड. Because the purpose of loan must be repair, renovation, construction or purchase of the property. ये हमेशा याद रखने का, बाकी किसी को अलाउड नहीं है. अभी मेरे को एक बात बताओ, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स लगेगा क्या? और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, वेदर इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा क्या? उसको नहीं लगेगा ना? श्योर, वेरी गुड. सो एज पर सेक्शन 23(2)(a), a house property shall be termed as a self occupied property where such a property or part thereof is in occupation of the owner for the purpose of his own residence, is not actually let out during the whole or any part of the previous year, and no other benefits therefrom is derived by the owner. So where an assessee has a residential house kept for self occupation and it cannot actually be occupied by the owner due to any reason, such a house shall be termed as unoccupied property. Such a house property shall be treated as a self occupied. Unoccupied भी होगा तो भी self occupied. ओके, बहुत लोग खरीदते हैं और उसको रख देते हैं वैसे, दे डोंट लेट इट आउट. ओके, सो ट्रीटमेंट क्या होगा? एनुअल वैल्यू ऑफ सच अ हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस शैल बी टेकन टू बी नील, 0. ओके, एंड नो टैक्स. You have lot of homework, lot of homework. ये करते हो कि नहीं तुम घर पे? Start doing it. Okay, एक अच्छा बुक बनाओ, उसमें सारे जितने भी इलस्ट्रेशन है सारे करके रखो. आपको एक बात पता है ना कि आपको कहीं भी कभी भी बाहर यानी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है. All that is there in the study notes. Okay, only you should have good practice. इसमें का अगर स्टडी नोट में का सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर देते हैं, राइट फ्रॉम इलस्ट्रेशन टू जो उन्होंने उधर दिए है ना प्रैक्टिस के लिए, दैट वन आल्सो, तो यू विल बी पास. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फिगर्स ही चेंज करते हैं, लेकिन दे आस्क यू फ्रॉम सिलेबस ओनली. और सबसे सही तरीका क्या है? पुराने पेपर्स लेने का, नॉट फॉर दिस वन. यानी टैक्सेशन में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं. ओके, फॉर अदर सब्जेक्ट्स पुराने पेपर लेने का, RTP लेने का, MTP लेने का, सॉल्व करते रहना. जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रैक्टिस में रहोगे, उतना ईजी है. सबसे सही चीज़ है कॉन्फिडेंस. ओके, कॉन्फिडेंस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम, एंड दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप ग्रेजुअली. ओके, पहला पेपर तुम सॉल्व करोगे ना, दैट टाइम कॉन्फिडेंस विल बी नील, 0. जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको,
ओके क्या करने का, जो भी आपका उसमें रॉन्ग हो गया है उसको चेक करने का, पहले तो सॉल्व करने का टाइम घड़ी लगा के, ओके उसके बाद उसको चेक करने का, थॉरोली चेक, ओके और अवेलेबल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। आप ICMA साइट पे जाओगे तो RTP के सॉल्यूशंस आर देयर, ओल्ड पेपर्स जो पुराने पेपर्स है उसके भी सॉल्यूशंस है, ओके तो सॉल्यूशंस रेफर करने के, कहाँ रॉन्ग हो गया वो देखने का, वो फिर से लिखते जाने का उनके लैंग्वेज में, उसने क्या लिखा था वो लैंग्वेज में लिखने का, ओके फिर से दूसरा पेपर चालू करने का, और दूसरा पेपर जब स्टार्ट करोगे ना तुम तब ये पढ़ लेने का कि मेरा किधर किधर रॉन्ग हो गया था। ये इतना भी प्रैक्टिस करोगे ना आराम से पास हो जाएगा, यू कैन स्कोर मार्क्स, ओके जो बोलते हैं ना कि सूरत के बहुत सारा ये आ रहा है उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, विजयवाड़ा के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो लोग यही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, और आपको भी यही करना है और अच्छा रिजल्ट्स लेके आने का। तो जितना करोगे आप उतना उसको, उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। चलो सो टुमारो विल स्टार्ट, और टुडे वांट टू स्टार्ट दिस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चालू करना है। टायर्ड और हाँ स्टार्ट, चलो चालू करते हैं। हाँ चालेल उद्या केलं, अच्छा चलो सो टुमारो आई स्टार्ट विथ दिस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखो अभी कैसा प्लानिंग है मेरा, आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल दिस, ओके अभी मेरे दो खत्म हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है अभी मेरा तीन बचे हुए हैं, एक है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, फिर है कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ओके तो मेरे को ये 3-4 लेक्चर लगने वाले इसमें। तो मेरे पास अभी कल का लेक्चर है, कल है 16 तारीख, ओके उसके बाद मेरे को 22-23 मिलने वाला है, 22-23 है ना, वो 2 लेक्चर और ये कल का एक लेक्चर, 3, ओके 22-23 के बाद मेरा लेक्चर आने वाला है 30 तारीख को, राइट 30 अप्रैल को, ओके तो तभी मेरा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया होगा। फिर मेरे पास एक ही बचता है, तो ये 25 मार्क्स का है आपका, और जो पहले पढ़ाया था मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स तो वो था 10 मार्क का, राइट ओके तो 35 मार्क्स आपका रेडी हो जाएगा, फिर बचा 15 मार्क्स का। सो दैट आई विल स्टार्ट इन मे, ओके 1 मई को मेरा लेक्चर है, तो 1 मई है छुट्टी, दैट इज महाराष्ट्र दिन, ओके और लेबर डे, ओके सो दैट डे अपना लेक्चर तो होगा नहीं, ओके तो फिर आता है 6th and 7th, ओके तो 6th and 7th को एंड फिर अप टू 15 मई आई विल कंप्लीट दिस, ठीक है तो आपको इनफ टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, 15 दिन और बाकी 10 दिन 9 दिन वो मिल जाएंगे आपको, 9-10 दिन, ठीक है सो 15 को अपना ये सिलेबस खत्म हो जाएगा।